Good morning, students. Today our topic for video demonstration is radiology of thorax. So we just see one X-ray, which is chest radiograph. So you can see this one is the chest radiograph. So we have taken the posterior anterior view, chest X-ray PA view, posterior anterior view. Posterior anterior view represents that the X-ray tube from where the radiations were coming was lying posteriorly to the patient, and where the image is captured, means the cassette or this radiographic film was lying anterior to the patient. Now what we can see in the radiograph, in the earlier discussion also, when we studied in the upper limb, I told you that whatsoever is bony will appear white in the chest radiograph. Why it will appear white? Because bones will contain minerals like calcium and phosphorus, जिसकी वजह से एक्सरेज की रेडिएशन थोड़ी सी रिफ्लेक्ट बैक होंगी, जिसको एटेनुएशन कहते हैं, उसकी वजह से हमारी इमेज वाइट अपीयर होगी बोन्स की। और जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एयर होगी, वेयर सो एवर एयर इज देयर लाइक लंग्स, द लंग फील्ड्स विल अपीयर ब्लैक. सो लंग फील्ड्स विल अपीयर ब्लैक बिकॉज इट इज़ एयर इन द लंग्स. सो एयर से सीधा हमारी रेडिएशन पास कर जाती हैं, सो दैट इज़ वाई इट लीव्स अ black image behind. So these are the lung fields, and whatsoever white you can see is the bony landmarks. Now as you can see, let us go through the bony landmarks which we can see. This one is the medial end of the clavicle. ये medial end है clavicle का. This one whole is the medial part of the clavicle. You can see it is articulating with the acromion process of scapula. This one is the acromion process of scapula. ये थोड़ी सी coracoid process है. ये ग्लिनॉइड कैविटी है जिसके साथ हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट कर रहा है. सो एंड दिस वन इज द कॉस्टल सरफेस ऑफ स्कैपुला और वेंट्रल सरफेस ऑफ स्कैपुला. सो दिस वन इज द स्कैपुला, शैडो ऑफ द स्कैपुला. सो क्लेविकल्स, acromion process, coracoid process, glenoid cavity, head of humerus articulating. So this one is the shoulder joint. What else you can see in the midline? We can see a body of the vertebra. So these are the thoracic vertebra. Apart from that, यहाँ पे अगर आप देखो थोड़ी सी black shadow दिख रही है. So black shadow always it represents in the thorax region. It is representing air. So this is trachea. जहाँ पे इतनी सी air पड़ी है हमें दिख रही है in the midline. So this one is air, and air is lying in the trachea. So this we can say this one is the trachea in this region. Moving downwards, this one whole you can see is the mediastinal shadow. ये जो दिख रहा है ये सारी की सारी हमारी mediastinal shadow है, ठीक है, which is representing the contents of mediastinum, which is basically the heart which we will see. So this one is the shadow of the heart you can see in this part. Now apart from that, we also see some margins. This one is a soft tissue, ठीक है. These are the shadows of the soft tissue which represent breast. So this is how we differentiate whether the radiograph is of male or female through chest radiograph. That we will see in female there will be large breast tissue or the soft tissue shadow, which will be absent in case of males. So this radiograph is of a female. Apart from that, these are the demarcations of the ribs. So ये सारी की सारी हमारी यहाँ से ribs इस तरह से extend करती हुई जा रही है. अब ribs को follow करेंगे, अगर suppose यहाँ से कर रही हूँ. So this one is the posterior end. और यहाँ पे it is articulating with the body costal, it is forming transverse process, articulating with the transverse process of vertebra to form costo-transverse joint. So ये costo-transverse joints हैं यहाँ पे respectively. So posterior end of the ribs. तो ये इस तरह से हम इनको trace करते हैं obliquely. They are going downwards and they are going obliquely this way. This is how we trace oblique. They are going anteriorly और थोड़ी सी ब्रॉड होंगी और obliquely जाएंगी, डाउनवर्ड्स जाएंगी. सो दिस इज हाउ वी ट्रेस द रिब्स इन द चेस्ट रेडियोग्राफ. सो दीज आर ऑल द रिब्स. अच्छा, हमें आगे वी ट्रेस एंटीरियरली, वी आर नॉट एबल टू सी द कार्टिलेज अनटिल एंड अनलेस इट इज़ नॉट कैल्सीफाइड. तो कार्टिलेज हमें तभी दिखेगी अगर वो कैल्सीफाइड होगी तो, अदरवाइज वी आर नॉट एबल टू सी कार्टिलेज इन द चेस्ट रेडियोग्राफ. Okay, now let us see the lung markings. This one whole is the
shadow, black shadow, which is representing lungs. Now we divide the lung into upper zone, middle zone, lower zone. Upper zone जो हमारा apex है up till the level of second rib. So this one is the apex of the lung, जो clavicle से ऊपर 2.5 सेंटीमीटर ऊपर तक 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर तक extend करता है. So this one is the upper zone. ठीक है, to 2 to 4 costal cartilage के level पे upper zone आता है. Second से 4th costal cartilage तक हमारा middle zone आता है. This one is the middle zone. मिडल जोन की सिग्निफिकेंस ये है कि हमें यहाँ पे थोड़ी सी वाइट मार्किंग्स दिख रही हैं. दीज आर रिप्रेजेंटिंग द हाइलर शैडोज. इफ यू फोकस ओवर हेयर वी कैन सी दीज आर द हाइलर शैडोज विच आर सीन इन द मिडल जोन कमिंग फ्रॉम सेकेंड टू फोर्थ कॉस्टल कार्टिलेज के लेवल पे. अब जो नीचे का ये लोअर लेवल रह गया, दिस वन इज द लोअर जोन ऑफ द लंग फील्ड्स. सो वी डिवाइड द लंग फील्ड्स इनटू अपर जोन, मिडल जोन एंड लोअर जोन. I hope I am clear till this point. Coming to the mediastinal shadow, this is the shadow of the mediastinum which is representing the heart shadow. Now going through this one will form the right border, itna, okay, which is, you know, it is formed by the right atrium. This one over here is the inferior border. This one is the inferior border और ये हमारा apex होता है. ठीक है, this one is the apex which we can see and it will lie somewhere at the level of fifth intercostal space, which will lie at the level of fifth intercostal space. Now this defined marking which you can see is the aortic knuckle. This one is the aortic knuckle. ये काफ़ी, this one, this is due to arch of aorta. तो ठीक है, arch of aorta हमारी रेडियोग्राफ में एक प्रोमिनेंट सी मार्किंग बनाती है जिसको हम एओर्टिक नक्कल कहते हैं. सो दिस वन इज द एओर्टिक नक्कल. दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, और ये हमारा लेफ्ट बॉर्डर ऑफ हार्ट आ जाता है. ठीक है, नाउ दिस वन इज द ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ हार्ट. दिस इज द ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द हार्ट एंड दिस वन होल इज द ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ योर थोरेसिक केज. ये यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ थोरेसिक केज है, from here to here, and this one is transverse diameter of heart. The transverse diameter of heart and this transverse diameter of thoracic cage is half. ठीक है, ये टोटली हाफ. तो इस हाफ होता है और इस रेशियो को हम कहते हैं कार्डियो थोरेसिक रेशियो. दिस रेशियो इज कॉल्ड एज कार्डियो थोरेसिक रेशियो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट whenever you will attend the clinics in medicine, because अगर हार्ट की एनलार्जमेंट है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है या कार्डियोमेगाली की कंडीशन है, तो उसमें कार्डियोथोरेसिक रेशियो 0.5 से ज़्यादा होगी. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू. सो इट कैन बी आस्क्ड इन योर वाइवा क्वेश्चन, व्हाट इज़ कार्डियोथोरेसिक रेशियो? ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ हार्ट डिवाइडेड बाय योर transverse diameter of the whole thoracic cage is representing your cardiothoracic ratio, which is always 0.5 in normal conditions. Which is always 0.5 in normal condition. If it is more than that, which will represent that there is enlargement of the heart due to any condition, so that will lead to condition is called as cardiomegaly. ठीक है. Now over here if we see this part, that lungs always rest on diaphragm. So on the right side is right dome of diaphragm, on the left side is left dome of diaphragm, and right dome of diaphragm is slightly at a higher level than the left dome because to compensate over here the large viscera which is liver. Viscera हमें x-rays में नहीं दिखते हैं, we just see the white part only. Now this right dome and left dome. Now I have to show you the costophrenic angles. And what are costophrenic angles? Now the area where diaphragm meets the thoracic cage means this area on the right side and this area on the left side. So these are called as costophrenic angles, where the dome of diaphragm meets your thoracic cage. These are costophrenic angles. ठीक है, राइट साइड पे थोड़ा सा अपर लेवल पे होगा, लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा लोअर लेवल पे होगा, बिकॉज ऑफ पोजिशनिंग ऑफ द डायफ्राम. द रीजन आई टोल्ड यू. Now these costophrenic angles, in case of if there is fluid is filled, they will become obliterated. ठीक है, so this is the clinical significance of costophrenic angles. Okay, coming to the what are the structures which are forming the right border of the heart from above downwards. So from above downwards it is right brachiocephalic vein, then we have superior vena cava. Okay,
superior vena cava. This one is the over here will be right atrium and inferior vena cava lower. So brachiocephalic trunk, we have right brachiocephalic vein. Sorry, we have right brachiocephalic vein. Then we have superior vena cava, right atrium, and then downwards is the inferior vena cava. So this is how the right border of the heart is formed. This is important because this is asked in Viva. Then the left border of the mediastinal shadow is formed from above downwards. ये left border है सारा और ये inferior border है. The left border from above downwards is formed by this one. This is aortic knuckle. So this is formed from above downwards by aortic knuckle. Then we also have a left margin of pulmonary trunk, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट दिस वन इज होल लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, तो लेफ्ट ऑरिकल थोड़ा सा पीछे है जो इसमें हमें दिखाई नहीं देता. सो लेफ्ट ऑरिकल, देन दिस वन होल इज द लेफ्ट वेंट्रिकल. So this is how the left border of the heart is formed, and this whole inferior border of the heart it will blend with the liver and diaphragm. So basically diaphragm पे rest कर रहे, तो it is blending with the diaphragm and liver. So this is all about the chest radiograph in radiology of thorax.